Assalamu alaikum and hello everyone. How are you all? I hope you all are doing great and learning English perfectly. I welcome all of you to this channel Everyday English with Amna. My name is Amna and I am an English language instructor. Today's video is very special because I'm going to talk about how you can improve your speaking style easily with simple steps. So first of all, let's see the content of the video. Today you will get to know the speaking test format and what are the some ways to enhance your speaking style. Then the assessment criteria, the marking criteria for this exam. After that, I will discuss the tips to crack the IELTS Speaking Part 1, Part 2 and Part 3. Now let's get started. But before starting the video, hit the subscribe button as well because this is also the part of the content. And do like, share and comment as well if you have any question. IELTS Speaking Test has 3 parts. One part is about introduction and interview. It will take almost 4 to 5 minutes. Then in Part 2, you have to speak on a topic for almost 1 to 2 minutes. And then last part, it is about discussion. 3 parts allow the candidate to use various speaking skills, and you should know that IELTS speaking test is recorded and the timing for the test is approximately 11 to 14 minutes or 15 minutes you can say that. अब ये क्लियर आइडिया बैठ गया कि IELTS स्पीकिंग टेस्ट के 3 पार्ट्स हैं और इसके ये टाइमिंग रहते हैं. उसके बाद फर्दर एक एक पार्ट को मैं इलेबोरेट करूंगी और फिर अंडरस्टैंड करेंगे इसको कैसे क्रैक कर सकते हैं. फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट द फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स टू क्रैक IELTS speaking exam easily. If you really want to improve your speaking, I'm going to share the 3 most important tips for improvement. Seriously, practice regularly if you want to boost your score. I know sometimes we don't have environment, we don't have a partner for practice. So what you can do? There is enough material available on internet and no one is without notes. I know that. सबके पास notes रहते हैं, कुछ ना कुछ sample answers रहते हैं, questions रहते हैं, कुछ idea रहते हैं. All you need to do first, you can listen the question on the internet or YouTube. You can find plenty of mock sessions available and then try to answer the question with the help of sample answer. And while doing this, only record yourself. You will definitely see the difference. The more you practice speaking English, the more comfortable you will become. क्या होता है वोकल कोच को आदत नहीं है क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट में बहुत कम इंग्लिश बोली जाती है, चांसेस भी बहुत कम मिलते हैं. आपके पास टॉपिक्स हैं और उससे रिलेटेड अगर नोट्स एंड क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर्स अवेलेबल हैं, बस आपको प्रैक्टिस करना है, रिकॉर्ड करना है. यू विल गेट टू नो कि कितनी जगह पे आप पॉजेस कर रहे हो. और समटाइम्स तो ऐसा होता है कि सेकेंड लैंग्वेज बोलने में सांस फूल जाती है क्योंकि नर्वस हो जाता है इंसान. तो जब आप रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि कहाँ मेरी वीकनेसेस हैं, किस पे मुझे काम करना है. दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द असेसमेंट क्राइटेरिया. दिस टेस्ट एम्स टू असेस योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली. एग्जामिनर देखे कितना इफेक्टिवली आप बात कर रहे हो और 4 वेज में आपकी एबिलिटीज को कंसीडर किया जाएगा. नंबर 1 इज फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस, दैट हाउ यू कैन कनेक्ट एंड सपोर्ट योर आइडियाज परफेक्टली. दैट्स रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज यू नीड टू कनेक्ट योर आइडियाज. लेक्सिकल रिसोर्सेज, हाउ मच रेलिवेंट वोकैबुलरी, टॉपिक से रिलेटेड वोकैबुलरी आप कितना प्रॉपरली यूज कर पा रहे हो. ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी एंड देन प्रोनाउंसिएशन. ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी का आपको जैसे डिस्कस करती हूँ कि सिंपल से आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज करने हैं, इसी तरीके से स्पीकिंग में भी आपको यूज करने हैं. और प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान रखना है क्योंकि वर्ड का पता होता है, उसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन अगर आप नहीं यूज कर रहे तो वहां से भी आपके मार्क्स जाएंगे. लेट्स टॉक अबाउट द स्पीकिंग पार्ट 1, दैट इज इंट्रोडक्शन एंड इंटरव्यू. ये पार्ट आपका 4 से 5 मिनट का रहेगा. इंट्रोडक्शन इंटरव्यू रहेगा. द एग्जामिनर विल इंट्रोड्यूस हिम और हरसेल्फ एंड देन कंफर्म योर आइडेंटिटी, लाइक asking you your ID and your passport, and then general question like your name, yourself, your home, your job, your interests, something like this, and similar range of topics you need to know, and answer to the point questions. ज़्यादातर elaborate हम यहाँ पे करना start कर देते हैं, तो कोशिश करें to the point answer दें और relevant vocabulary choose करें. Now let's discuss few tips to crack part 1, speaking test part 1. Here I have few important tips. First of all, be aware of question types. I mean to say that what type of questions an examiner can ask in part 1. And the part 1 is quite predictable, so practice at home recording ideas, and as you know that the questions would be regarding general questions about yourself, your job interest and the range of similar topics. So you can practice at home as well if you have a relevant vocabulary and you know that how much you need to answer the questions. Secondly, keep in mind that examiners can assess what they hear. They will expect you to speak up, so don't give 1 or 2 word answers. Try to elaborate your answers with logical examples and make sure to relate your answer. First answer the question and then you can add information. For example, if examiner or interviewer is asking you regarding do you have any plans for going to universities, so first of all you can answer the question and then you can relate your answer with logical explanation. For example, do you have any plans for going to university? You can answer, that's for sure, I'd like to major in chemical engineering. And furthermore, do you like swimming? Yes, I do, but I don't have much time to swim these days. So
So you see, you have to answer first and then you can relate your answer and you can add more information about your answer. And remember one thing, the good answer have main and supporting ideas. For example, I love swimming because it's so relaxing. Besides, it helps me to be in shape. Here we have a main idea and then we are supporting our idea. For example, I love swimming. This is a main idea, and relaxing and in shape is supporting idea. So you should use supporting ideas in order to elaborate your answers. Next tip is use appropriate linking words. For example, because, besides. I love swimming because it is so relaxing. Besides, it helps me be in shape. This is the list of linking words you can use while constructing your ideas, because linking words connect sentences and ideas beautifully and give the perfect answer, and it shows coherence between sentences. If you can't think of a word, simply paraphrase it. For example, he's a reliable person. You can also use he's the sort of person you can always trust on, depend on. And further, if she is so punctual, you can also use she is never late, always on time. So such type of a paraphrasing you can use in order to answer your question perfectly. In order to present yourself in the best way possible, you should try to sound positive about your past, present and future. This is really important. You have to be positive in your responses and listen to the questions carefully and make sure you answer the question. So answer the questions directly and to the point. It is really important. You have to be on the point. And while speaking, try to be relaxed and speak confidently. It doesn't matter. You have to own your confidence. It's really important that how you are presenting your answers confidently, and your gestures matters a lot. एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि स्पीकिंग का टेस्ट आपका ये देखा जाता है कि आप किस तरीके से अपने इमोशंस, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो. तो कोशिश करें कि डिफरेंट किस्म के एक्सप्रेशंस यूज़ करें. लाइक यू कैन से आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन, आई एम फॉन्ड ऑफ, आई एम कीन ऑन. यू कैन यूज सच टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स. नाउ लेट्स मूव ऑन पार्ट 2. पार्ट 2 इज इंडिपेंडेंट लॉन्ग टर्न. 3 to 4 minutes का ये आपका रहेगा. क्यू कार्ड सेक्शन भी इसको बोलते हैं. द एग्जामिनर विल गिव यू अ टॉपिक कार्ड एंड हैंड यू सम पेपर एंड अ पेंसिल टू मेक नोट्स. You have 1 minute to prepare before speaking for 1 to 2 minutes. जो आपको क्यू कार्ड मिलेगा, जो टॉपिक कार्ड रहेगा, they are very general related to your personal experiences and the examiner will remain silent while you are speaking. 2 मिनट का आपको टाइम मिलेगा और एग्जामिनर बिल्कुल चुप रहेगा, और इसमें you don't need to worry about if examiner is looking somewhere else. You just keep speaking. That's really important. Now let's talk about few tips and tricks about part 2. First of all, read the topic card carefully and you'll have 1 minute. You need to make the best use of that minute given to organize your answer and make brief notes for each keyword, such as the best tip here I want to share. You can use like why, where, how in order to express your answers. The common criticism for some candidate is that they don't plan and you don't impress the examiner if you start immediately without planning. जो भी आपका इंग्लिश का लेवल है, प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए कीवर्ड्स किस में से निकाल सकते हैं? who, what, when, where, how. कुछ भी टॉपिक है उसमें आप इसे कब हुआ, कैसे हुआ, इस तरह के क्वेश्चंस को जहन में ला के आप प्लान कर सकते हैं. You cannot impress examiner if you start immediately. कुछ भी आप immediately बात करना स्टार्ट कर देंगे, एग्जामिनर बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होगा. So you need to plan first. सेकेंडली, डोंट राइट ऑन द टॉपिक कार्ड. आपको ऑलरेडी एक पेपर दिया जाएगा, पेंसिल रहेगी, आप उस पर ही अपने कीवर्ड्स लिखें. जो मैंने बताया कि आप हु, व्हाट, व्हेन वाले स्टार्ट करें, इस तरह के क्वेश्चनिंग लेकर आएँ. कोई इंसिडेंट है, कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, तो ये फ़ौरन आपको क्वेश्चंस आंसर्स बनाने में बहुत हेल्प करेंगे. राइट नोट्स नोट इन सेंटेंसेस. नोट्स लिखें बट जस्ट कीवर्ड्स में लिखें. फर्दर, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू कीप टॉकिंग बट डोंट टॉक अबाउट थिंग्स विच अरंट रेलिवेंट टू योर टॉपिक. इररेलेवेंट बात करने की ज़रूरत नहीं, बस बात करना ज़रूरी है. टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी स्टोरी बनाए, वो जेन्युइन हो या उसमें कुछ भी हो, लेकिन आपकी बात करना ज़रूरी है. एज यू स्पीक, रेफर टू योर नोट्स टू ऑर्गेनाइज योर आंसर्स. नोट्स पे भी बार बार देख सकते हैं कि हाँ, पहले मैंने वाई की बात कर ली, फिर व्हाट की बात करूँ, उसके बाद वेयर की बात करूँ. इस तरीके से भी आप क्वेश्चंस के आगे ही कुछ कीवर्ड्स लिख के ईजिली आप आंसर दे सकते हैं. रिमेंबर वन थिंग, दैट IELTS टेस्ट इज कम्युनिकेशन टेस्ट. दिस स्पीकिंग टेस्ट इज लिटरली अबाउट द कम्युनिकेशन टेस्ट, not a memory test. If there is something you can't remember, simply use the other words and explain about it. For example, you can say, I'm not really sure when it happened to me, but I'm sure I was very young, and such type of sentences, phrases you can use in order to filling the blank when you feel that you don't have any idea. And one thing more that is really important, don't worry if you decide to change a little of what you have planned to say. कुछ अगर प्लान किया है नोट्स में, so it's important keep talking. ज़रूरी नहीं जो प्लान किया बस वही मुझे बात करना है, जस्ट रेलिवेंट रहे, लेकिन आप बात कर रहे हो तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट. अच्छा, सब पार्ट 2 में सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है कि हमें जो से अपने आंसर को एक्सटेंड करना नहीं आ रहा होता. ज़्यादा से ज़्यादा भी हम बोल लेते हैं 30 सेकेंड या 1 मिनट के लिए बोल लेते हैं, उसके बाद एक्सटेंड कैसे करें. तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप इधर कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दिया करें. अगर
एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं और फिर समझ नहीं आ रही कि इसको एक्सटेंड कैसे करें, 1 मिनट तक तो बात कर लिया, फर्दर क्या बात करें, तो उसी टॉपिक को आप किसी दूसरी चीज़ के साथ कंट्रास्ट स्टार्ट कर दें तो भी बहुत ज़्यादा आप हेल्पफुल रहेगा। एंड डोंट मिस आउट एनी क्वेश्चंस, दैट्स इंपॉर्टेंट। कुछ भी मिस नहीं करना, डोंट हेजिटेट फॉर टू लॉन्ग व्हेन इट्स टाइम टू स्पीक। जब एग्जामिनर कहे बात करना है तो हेजिटेट इतना लंबा भी नहीं कर लेना कि वहाँ से भी आपका इंप्रेशन बहुत ख़राब होगा। तो आप अपना स्पीकिंग पार्ट 2 इस तरीके से भी स्टार्ट कर सकते हैं। दीज आर सम इंट्रोडक्टरी phrases I'd like to talk about, I'm going to talk about. And if you are talking about the background detail, you can use to the best of my memory what I most remember about this, her, and I vividly recall the day I first met her or him. I particularly you can use. So such types of phrases you can use. Use a number of adjectives to describe the situations. That I was exciting, I was thrilling, interesting, and if you are talking about something that is boring, I was boring, exhausting, confusing. So and try to use more adjectives in order to express your thoughts, feelings, ideas, and situations. Now let's talk about the last part of this test, that's part 3, and this is discussion, and it is approximately for 4 to 5 minutes. The examiner will invite you to discuss a number of issues broadly related to the different topics, and maybe these topics are related in the theme too in your part 2, and the question will increase in difficulty slightly as this part of the test progresses. एक चीज़ जहन में रखना कि कोई भी सही या गलत आंसर नहीं होता। स्ट्रक्चर अगर सही यूज़ करें, if you are using a appropriate structure, appropriate idea, relevant idea है तो करेक्ट है। कुछ भी आप स्टोरी बता सकते हैं, लेकिन appropriate और genuine की टेंशन ही है कि भाई ये genuine स्टोरी रहनी चाहिए। You can talk about anything, but वो रिलेट करनी चाहिए टॉपिक से। Try to give information, interesting and appropriate responses to the examiner. सिर्फ यही ज़रूरी है, और क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्वेश्चन को इसको समझ में आएगा। ट्राई टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। ये बहुत ज़रूरी है कि इसको सही से क्वेश्चन समझ आया तो ये आंसर उसके अकॉर्डिंगली दे रहे हैं। डोंट वरी इफ़ यू कैंट थिंक ऑफ अ वर्ड, यू कैन पैराफ्रेज करके यूज़ कर सकते हैं और अपने आंसर्स को एक्सटेंड करने की कोशिश करें। लिंकिंग वर्ड्स यूज़ करें, एक्सप्रेशंस यूज़ करें, सपोर्ट करें अपने आइडियाज़ को। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। अब इस पार्ट में बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चनिंग रहते हैं, वाई के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, और समटाइम ऐसा होता है हमें उस सब्जेक्ट का कुछ आइडिया ही नहीं होता, तो इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। अवॉइड रिस्पॉन्डिंग विद आई डोंट नो और आई हैव नो आइडिया। सो यू कैन थिंक अबाउट इट एंड यू कैन यूज सच टाइप ऑफ फ्रेजेस। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज समथिंग, ट्राई टू ऐड सम इन्फॉर्मेशन दैट इज यू फील दैट यू कैन टॉक अबाउट। यहाँ पे लास्ट पार्ट की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है कि हाउ वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। लाइक हाउ इंपॉर्टेंट इज़ दैट, हाउ इंपॉर्टेंट इज़ टू हैव अ रेगुलर फिटनेस प्रोग्राम्स। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो एक चीज़ जहन में रखना है, हाउ के साथ आपने एडजेक्टिव और एडवर्ब लाजिम यूज़ करना है, बिकॉज ही इज़ आस्किंग अबाउट द डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ योर ओपिनियन। डिग्री का मतलब है कि आपने उसकी इंटेंसिटी बतानी है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट है। हाउ का जब मतलब क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसमें आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब्स लाजिम यूज़ करने हैं। इसी से भी आपका स्कोर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। बस कोशिश करें कि कीप टॉकिंग, एंड इफ़ यू डोंट नो समथिंग अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक, ट्राई टू रिलेट द टॉपिक एंड देन एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडियाज़। इफ़ यू थिंक दैट इट इज़ नॉट बेटर, बट इट इज़ बेटर देन सेइंग नथिंग एट ऑल। So this is the end of the video. I hope you liked it. Just keep learning, keep practicing, and don't forget to subscribe my channel, and do like, share and comment as well. And further I will talk about more on English, and I will also share some sample answers as well. And that's it. Take care. Allah Hafiz.